Okay, so the agenda for today is that we will continue working with the dplyr library, and now for today we're going to be working with some aggregation and summarizing. So most of what we have done until now were things जो हम अगर Excel की terms में बात करें, it would be कि आप किस तरह से data को अगर आप ऊपर filters apply करके किस तरह से filter कर सकते हैं, sort कर सकते हैं. So in this case, when you're aggregating variables or summarizing variables, it's going to be similar to what you used to do with your pivot tables. आपके जहाँ पे अगर for example in this case you have 400 rows of data, आप किस तरह से इस data को summarize करके present कर सकते हैं. Now this is going to be very useful because a lot of times the data that you have is going to be very big. It's going to have hundreds of thousands of rows, and to understand that row by row separately, as in try and look for looking at specific rows by filtering and sorting, it's not going to be very feasible because आपके पास almost हर filter हर उस subset के अंदर you're going to have a lot of rows. उनको individually इस तरह से देखना इतना जो है उसका कोई as such फायदा नहीं होता, कोई trend नजर नहीं आता. So what you need to do in those cases is you try to summarize the data and see के वहाँ से आपको किस तरह से कोई summarized information मिल सकती है. So let's look at the same data set again. So we have this car seat data frame. So those of you who do not have this RStudio loaded right now, you should open RStudio, run this library again, and reload the data in your system ताकि आपके पास ये data यहाँ पे right side पे show हो जाए, and we can work with that. Okay, so sorry, I think I've not shared my screen yet. So let me do that. Admit some of the other people. So I hope you can see my screen now. So somebody wanted to say something? Sir, बस screen का ही कहना था आपको. Okay, so can you see it now? Yes, sir. Okay, great. Okay, so you need to have this library loaded and also the dataset loaded up. So first initial two commands, you have to run those again ताकि आपके पास data system में load हो जाए. Right? Remember last time we worked on these four verbs कि आप किस तरह से कुछ columns select कर सकते हैं from your data, how you can filter them based on certain conditions, how you can sort the data using this arrange verb, and how you can create new variables using this verb called mutate. Okay? Now today we're going to be working with aggregation functions. So let me come down here. So one of the most commonly used functions in this library is this count function. Okay? What it does is so a simple command like this, when you do not have anything in its arguments, what it's going to do is it's going to tell you कि उस जो भी आपके पास आपने पहले run किया हुआ है before using the count function until here, how many rows are there in that data. So this is actually what we were doing in our last session. We had this data frame. We selected a few variables from that data, and then we arranged them in the descending order based on unit sales, and we applied a filter on price. That price should be greater than 100, and we only need those rows जहाँ पे price greater than 100. So let me run this command again, ताकि we can review what was there in our output was select. So let's try to run this. So if I run this command, remember हमारे पास इस तरह की output आ रही थी where we had so let me emphasize. So we have these variables shown here from unit sales, price, comparator price, and so on. यहाँ पे in my view here, I can see 125 rows, and in addition to that, it tells me that
R has omitted 173 rows from this print because इससे ज़्यादा वो मेरी स्क्रीन पर प्रिंट नहीं कर सकता. So 125 plus 173, ये जो मैंने ऊपर ये सारे run किया है, the filter, the sort, the select, all of that is giving me 173 plus 125, so that's a total of around 298 rows as my output. Okay, so if I look at it here, this is 125, this is 173. The total, in total, I'm getting 298 rows as the output. So this, what this count function is going to do now is it's going to tell me, okay, मेरे पास total rows कितनी. So if I add this to the pipeline, if I add this count function without any arguments to this pipeline, I'm going to get this 298 as the output, and that is the number of rows that are available in whatever I've run above this function. Okay, so I hope that's very clear. Now, this is interesting, but not as interesting as some of the other things we can do with this function. And that would be कि आप यहाँ पे count के अंदर कोई भी variable as an argument input कर सकते हैं. So mostly it's going to be a categorical variable, and I'll show you why that is the case. So for example, in this case, अगर हम देखें ऊपर जो हमने variable select किए हैं, we have these two variables here, shelf location. Remember, इसकी values थी possible, bad, medium, and good. And we had this US variable which could take values of yes and no. So these two are categorical variables. So let's try putting one of these in that function. So if I put shelf location inside this function now, so shelf location, and I try to run this again. So now I get a different kind of output. अब ये मुझे क्या कह रहा है? From my data, it's telling me, okay, for each type of shelf location, ये जो मैंने ऊपर सब filter किया है data, उसके अंदर how many rows correspond to bad shelf location, how many rows have good shelf location, how many rows have medium shelf location. Ab rows, you remember, rows, every single row in this data represents a store that this car seat selling company has. So that means there are, so from out of all the stores where the average price is more than $100, we have 66 stores that have a shelf location that is bad. We have 64 that have a shelf location that is good, and we have 168 that have a shelf location of that's qualified as medium. Okay, so this is how we can. This is what we can do when we add an argument inside this count function. Let's try to do the same thing if we add, let's say, the US variable inside here. If we do that, it gives us this output. So it means out of this filtered data, we have 101 stores that are operating outside the US, and we have 197 stores that are operating inside the US. Okay? And we could also do this, that we add both of those variables at the same time inside this function. So we could do, let's say, count of shelf location and US. So comma US. Now let's try to run this again and see what it gives us. So if I run this again, I get something like this. So this is the output that I'm getting. So any idea what this output means? So anybody would like to respond to this? So what does this output mean? इसमें से ग्रुपिंग कर दी है जो गुड बैड और मीडियम है यस नो के साथ कि बैड में कितने नो हैं फिर बैड में कितने यस हैं इसी तरह गुड में कितने नो हैं कितने यस हैं. Okay, I can't see my meeting controls. Let me try to figure out. Yes. So who was this? Okay, yes. अच्छा, so you're saying कि आपने bad के आगे भी grouping कर दी है, फिर good के आगे grouping कर दी है, and medium के आगे group कर दी है. Yes, so that makes sense. So essentially what you've done here is we are looking at all possible combinations of the variables that we've input there. So shelf location की 3 possible values थी,
US की 2 possible values थी. So all it's doing is it's looking at all possible combinations of that. So that's total 6 combinations. That's 3 multiplied by 2. So we have 6 possible combinations there. और उन सब के आगे it's telling us कि अच्छा when out of that filtered data, so remember that we are working in a pipeline here, so आपने बहुत सारा इसके ऊपर already कुछ functions apply कर लिए हैं. So out of all this filtered data, we are getting this output के the stores that have a bad shelf location and that are operating outside the US, their total number and this data is 23, and so on for the rest of this. Okay. Now, there are also some other arguments that you can add to this function. So, for example, we have one argument called sort. So, if we say sort is equal to true, this is going to give us give us a sorted outputs. So let's try to run this again. So this output at the end, that's going to be sorted in this descending order, right? So ये हमेशा यहाँ पे इस तरह से descending order में sort करता है by default. अगर आपने इसको ascending में करना होता, we'll have to use the arrange function. I'll show you how to do that as well. But this is going to sort it in the descending order like this. So maximum number जो होगा, that's going to be on the top. Now, so all this does is whatever variables we input here, उनके सारे combinations बना के वो हमें total counts बता देगा. Now, let's say we were instead of the counts, we were interested in something else. So let's say what I want to do is I want to see okay, what is, for example, my so let's say what are my total unit sales? What are my total unit sales when I have the shelf location of medium and the store is inside the US? So what are my total sales for these categories? Okay, इस combination के लिए मेरे total sales क्या है? So right now I'm just getting the counts. The way to have the sales here instead of counts is this. So there's another argument here of this count function, and that is called this weight function, weight argument. So this it's called WT से represent करेंगे. WT is equal to, so let's say I put WT equal unit sales here. This is going to tell this count function कि आपने ये जो भी count करना है उसको weight करना है according to unit sales. So what that means is it's going to tell me कि total unit sales क्या हैं for each of these combinations. So let's try to run this again. And when I run this, I'm getting this total sales for each of those combinations. Okay? Any issues with this? Does this work for everyone? Yes, no? Okay, so yes. Do you weight है ये उनका sum कर है जो जितनी unit sales है मतलब? Yes, so it's totaling all of them up. Yes. Okay. It's giving the total number. Yes. Okay. So sort is equal to true. So that means कि आपने इसको descending order में sort भी कर दिया. लेकिन सर फिर इसके अंदर ये वाली जो हमने एक कमांड लिखी थी कि filter price is greater than 100, तो फिर इसका तो कोई यूज नहीं हो रहा ना इसमें? नहीं. So remember, it's still, we are still working in that pipeline. तो अभी तक देखिए जो हमारे पास यहाँ तक जो output थी ना, ये सिर्फ उन स्टोर्स के लिए ये डेटा आपको दे रहा है जिसमें ऑलरेडी ये फिल्टर अप्लाइड है. सो अगर मैं इस फिल्टर को हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल, सो लेट्स ट्राई डूइंग दिस. सो लेट्स से आई रिमूव दिस रो फ्रॉम हियर. ओके, मैं इस रो को हटा दिया, ये फिल्टर मैंने हटा दिया. लेट्स ट्राई रनिंग दिस अगेन. सो माय आउटपुट इज डिफरेंट इन दिस केस. सो ऊपर देखिए मेरे पास क्या आ रहा था, मैक्सिमम नंबर. I was getting a maximum of 764,000, 765,000. Now I'm getting a maximum of 1.03 million. So अब यहाँ मैं filter हटा दिया, तो now we're looking at all stores. लेकिन जब filter apply किया हुआ था, we're only looking at those stores जहाँ पे ये price, जो average price है, that is greater than 100. ठीक है?
So that is still being used. आप उस pipeline में काम करें. So this is all one single command. सर अब अरेंज की जरूरत है हमें जो हमने Okay. पहले यूनिट सेल्स में की है अगर ये सॉर्ट काम कर रहे हैं इन पे. Yes, so if we need it in the descending order, अच्छा ऊपर वाली की बात करें, कह रहा हूँ This हाँ जी one? मैं कह रहा हूँ कि अरेंज Okay. और सॉर्ट दोनों यूज हो रहे हैं. no, so that is not needed anymore. So that's not needed, and Right. in fact that's not even going to be applicable here, because remember अगर मैं इसको let's say मैं sort को यहाँ से हटा देता हूँ, and let's see what the output that I get. So मैं sort को यहाँ से हटाता हूँ, ऊपर देखिए मैंने descending order में किया हुआ unit sales के ऊपर, ठीक है, but am I getting this sorted here? I'm not getting it sorted here. So any idea what the reason could be for this? ऊपर देखिए अरेंज तो अप्लाई किया हुआ है डिसेंडिंग यूनिट तो सेल्स. वो अगर हम इसके बाद फिर लिखेंगे अरेंज का तो फिर वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये जो काउंट के बाद वाले में होगा, क्योंकि पहले जो अरेंज कर रहा है वो उससे पहले वाले को सिर्फ कर रहा होगा. Yes, that's true, but can somebody give me a more detailed response on that, as in what exactly is the reason? यहाँ पे भी तो हम यूनिट सेल्स को ही कर रहे हैं ना, बाद में भी हम यूनिट सेल्स को यूज कर रहे हैं. सर Yes. सर जो हमने ऑपरेटर लगाया हुआ है इससे ये है कि फिल्टर के बाद जो चीज है वो अरेंज नहीं हो रही, फिल्टर से पहले की चीज अरेंज हो रही है. तो Okay, so Azhar, just to cut you off there, let me try to run this. मैंने filter तक किया हुआ था ना, let me try to run this. So let's see the output that I'm getting. So unit sales, yeah. So this is the output that I'm getting if I run until here, जो मैंने filter command तक run किया. So यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए ये सारी sales very sorted है. Yes. The problem is when I run the count function, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा. सर हम फिल्टर करने के बाद Yes, anyone? Okay, so सर क्योंकि yes. हम क्योंकि जो पहले हम फिल्टर कर रहे हैं वो तो हम रोज को फिल्टर कर रहे हैं ना, तो काउंट वाले फंक्शन ने उन सब का जो सम कर दिया, तो सम के बाद हमने अब सम को फिल्टर करना है. Exactly. So yes, very good, Osama. So basically, जो यहाँ तक ये पहले वाला arrange function था, that was being applied to the original rows in the data. ठीक है? जब ये count apply हो गया, तो now we have summarized the data. तो अब ये देखें सारा ये data aggregate हो गया. So now these unit sales are different from the unit sales that I had before. This is sum of unit sales. तो हमने sum of unit sales को sort नहीं किया. ठीक है? So we can apply the sort function here to sort this data now. Now, if we wanted to, for example, sort this in the ascending order, we would have to use arrange here, and we can sort it using that. However, in this case, I cannot sort it using the unit sales function, unit sales variable, because देखिए इस data के अंदर जो मेरे पास output है, इस जो last मेरा column है, इसका जो नाम है ऊपर, that is n. ठीक है, that is the number, that's just n, but that's not unit sales. मैं यहाँ पे sort करूँगा, I'll have to use this, let's say ascending करना है तो मैं सिर्फ simply वैसे कर सकता हूँ arrange n. ठीक है, because उसका नाम यहाँ पे n है. I can run this and I get this in ascending order in this case. Similarly, अगर आपने इसको descending order में करना होता, apply the descending function around that, आप उसको वो भी कर सकते हैं, and it's going to do the same thing as adding a sort argument in the previous row. तो उससे भी आपका वही चीज दोबारा से apply हो जाएगी. So you can also do this and sort this in descending order like this. Okay. So this is how we can use the count function here, right? So these are all the different things we can do using that. Excuse me, sir. Now, yes. Sir, n क्या था, आप repeat कर सकते हैं, voice break हो रही थी. Okay, so remember जब हमने ये run किया था ये count function, जो मेरे पास output आई है नीचे, ये देखें ये variable names हैं. जो मेरे पास first column है, that's named shell location still. The second column is also still named US. लेकिन जो last column है, that's named n. तो हम unit sales नहीं use करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे variable का नाम अब n है. ठीक है, वो use करना पड़ेगा. Right. ठीक है sir. Okay. We can also, of course, पहले आपने कहा था कि हमने इसको arrange करना है that it should be medium and then we should count
द टोटल फॉर मीडियम, तो हम उसके लिए अगर करना हो तो हमें यहाँ पे एक और फिल्टर लगाना पड़ेगा इसके काउंट के बाद, जिसमें होगा कि शेल्फ लॉक इज इक्वल टू मीडियम। अगर हमें सिर्फ मीडियम का देखना है, जी सर। yes, you can apply a filter here. You can say filter shelf location equal okay, let me just quickly check whether that was double equal sign or single. I think single might work. Shelf location is equal to medium. So we can do this. Okay, so let me just quickly check what is the error. वो सर आपने साइन नहीं डाले वो उसकी कंटिन्यूटी के। Okay, yes. So let's see if this works. I'm not sure about the syntax here. So this is not working. Yes. So we'll have to use double equal. Okay, so it works now. So medium, yes, no, and we have the same numbers here again. जो ऊपर आया था 764 and 373 था, उसको फिल्टर कर सकते हैं उसके बाद में। और सर ये वाला फिल्टर जो आपने लिखा है ये हमें हमेशा काउंट के बाद ही लिखना पड़ेगा अगर हमने उसके ऊपर कोई वर्किंग करनी है। अगर हम काउंट से पहले लिखेंगे तो वो तो पहले वाले डेटा वो कर देगा ना। इस केस में इट विल स्टिल वर्क। देखिए अगर आप ओरिजिनल डेटा के अंदर से वो सारे स्टोर्स निकाल देते हैं जिनमें शेल्फ लोकेशन मीडियम है, जब आप उसको समराइज करेंगे तो ऑफ कोर्स यू स्टिल नॉट गोइंग टू गेट या अगर आपने मीडियम को फिल्टर करना है, अगर आपको सिर्फ मीडियम वाले चाहिए, आप मीडियम के अलावा बाकी सब निकाल देते हैं, तो ऑफ कोर्स जब आप समराइज करेंगे उसको आपके पास सिर्फ मीडियम वाला ही रहेगा। सो इट डजंट मैटर इन दिस केस इट डजंट मैटर। In some other cases, it might matter. For example, इसको उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ for the count function, it will still give me the same result. ठीक है, आप से पहले अप्लाई करते हैं उसने ऑलरेडी देखे उसने बाकी सब रोज को तो निकाल दिया ना डेटा से, so that still works. Okay, any other questions? No sir. Okay, so सर ये आपने सॉर्ट को निकाल के जो नीचे अरेंज किए, तो अगर हमने उसी के अंदर नहीं कर सकते डिसेंडिंग में भी? नहीं, उसके अंदर I could not figure out an option to do that. I might have to search for it again, but I could not figure it out directly because यहाँ पे देखें sort का सिर्फ एक जो है ना वो argument in fact is true or false. अगर ये false होगा तो उसको वो sort नहीं करेगा, अगर ये true है तो उसको sort करे। अभी sort उन्होंने जो है जिस तरह से define किया हुआ यहाँ पे that is simply in the descending order. So might have to look at the help files of this count function and see अगर उसमें directly करने का तरीका है, but in any case we can still use the arrange function and that still works, does the work for us. ठीक है सर, दूसरा ये n पे थोड़ा सा फिर से बता दें। So that was simply कि आपके पास आउटपुट आती है, that उसमें वेरिएबल का नाम जो लास्ट कॉलम है वो n है, तो आप जब अरेंज कर रहे हैं उस लास्ट कॉलम को तो आपको n यूज करना पड़ेगा एज द वेरिएबल नेम। आप यूनिट सेल्स यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे जो आउटपुट में वेरिएबल का नाम है दैट इज n। ठीक है, that's all that's was required here। ठीक है, okay, so let's look at some other functions. So count is basically a special case of some other functions, some other general functions. हम आगे देखते हैं यहाँ पे। So we have two functions that we're going to be looking at. So one is group by and another is summarize. Okay, so let's look at them and see कि हम क्या कर सकते हैं। So let me remove this for now. Let's copy this. Achha. Let's say I'm looking at that same number still. So I have, let's say, this thing here. ठीक है, मेरे पास ये आउटपुट थी, मेरे पास रोज थी। अब मैंने इसको क्या करना है, what I want is I want to look at the sales numbers। ठीक है, अब उसमें let's say what I can do is I can talk about, for example,
So let me not use the naming first. आप लोग confused ना हो उससे. अच्छा. So this is the output that we were getting from the original data. हमने उसको filter किया, arrange किया. Now let's say from this filter we want to see कि हमारी जो है वो total sales कितनी है from this data only. ठीक है? So ये जो मेरे पास output आई है, I want to see what is the total sales that I'm getting from all the stores where the average price is greater than 100. So what I can do is I can apply this summarize function there, and inside that summarize function I'll tell R कि आपको unit sales को sum करना है. Now just like pivot tables, we are going to be able to use all those other types of aggregations as well. For example, we can use sum, we can use mean, we can use max, we can use minimum, we can use n for the number for count, and we can also use median. We can do all of that stuff here as well. So यहाँ पे what I'm trying to do is I am basically doing the sum here. ठीक है? So yes, so I can use all of them, and in this case I'm trying to use the sum function. So let's try to run this and see what I get. So it tells me that the sum of unit sales from this filtered data is this much, 2.06 million. Okay. Now let's say I want to look at the average sale on these in these filtered stores. I can use the mean function instead, and that's going to give me the average sales in these stores. So on average, I'm selling around 6,924 units in the stores where the average price is greater than 100. Okay? And similarly, we can do the other as well. आप find कर सकते हैं आपकी maximum sales कितनी है, maximum sales कितनी है in a particular store from these filtered stores. Minimum find कर सकते हैं, and so on. ठीक है? Now ये आपको देखें सिर्फ एक सिंगल नंबर देगा हमेशा, क्योंकि आपने कोई भी ग्रुपिंग अप्लाई नहीं किया इसके ऊपर. जो भी आपके पास डेटा था उसने उसके टोटल आपको बता दिया कि मीन क्या है, सम क्या है, and you can do the other things as well. Now let's say we want to look at now this is of course useful in one sense, लेकिन हम इसको और थोड़ा सा इसमें ग्रुपिंग अप्लाई कर सकते हैं to extract more information out of it. So for example, what we can do is we can see कि अच्छा, how are the sales varying when when we are outside the US or inside the US, or when the shell location is bad, medium, and good. Now, in order to do that inside this filtered aggregated data, I'll have to group these variables first before I can apply any summarize function like this. Okay, to summarize the pehle, what I'm going to do is I'm going to add another function that is called group by. Okay, you can think of it like जिस तरह आप pivot tables में देखते थे, आपके पास वो 4 boxes होते थे, right? Remember, आपके पास एक rows का box था, एक आपके पास columns का box था, एक आपके पास values का box था, right? So you can think of this group by command as your rows box. अब इसके अंदर जो भी add करेंगे, it's going to break up your data according to those variables. ठीक है, तो जिस तरह से rows box के अंदर आप जो भी variables डालते थे, you can think of this group by command like that. And the summarize command is going to be like that values box there. कि आप यहाँ पे generally values input कर रहे होंगे जो आपको show करनी है in those groupings. ठीक है, I hope that makes some sense. कि आपने pivot tables पे काफी काम किया हुआ पहले, तो rows box को आप इस तरह group by की तरह समझ सकते हैं. So what we can do here is we can add the US variable, and we can also add the other variable, that is
shell location where. Okay, it works the same way here as well. जो आप variable पहले लिखेंगे, that's going to be your parent category in a sense. जो आप बाद में लिखेंगे, that's going to be your child category. ठीक है, so US जो है वो पहले वो US पे yes no पे categorize करेगा in this case. तो उसके बाद फिर yes के cases में it's going to categorize further among bad, medium, and good. And similarly, when you have no in the US variable as well. So let's try to run this as well. So if I try to run this, I get something that looks like this. Okay, so Excuse me, sir. yes. सर ये जब तक मैं समराइज में सम यूज कर रहा था तो यूनिट सेल्स को रीड कर रहा था और Yes. अब ये नहीं कर रहा. मैंने एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है आपकी तरह. Okay, yeah. So I'm getting पाइप ऑपरेटर भी डाला हुआ है. Yes. Okay, so let me try to look through it. So अगर मैं इसको ये करूँ, it works. So if I apply, let's say unit sales first, sum of unit sales. अच्छा Unit. Just give me 1 minute. Okay, so it's not reading unit sales for some reason. सर वो इसलिए yes, कर रहा है so it's क्योंकि आपने ऊपर वो N. डाला भी नहीं है. हाँ, नहीं इधर सही था. उसके आगे ग्रुप बाय के आगे हमने फिर उसके आगे वो कमांड देनी है कि इसी को कैरी फॉरवर्ड करे. No, that's not really needed Pipe as operator? such. फिर मैंने वो किया, मेरा चल पड़ा. Yes, Pipe pipe operator. Yes, so pipe operator का issue है. Okay, so it keeps happening. So जब आप खुद भी कर रहे होंगे, it might run into such problems. अगर मैं pipe operator डालता हूँ, now it works, right? So pipe operator डालना भूल गया था मैं, so it still works. ठीक है? ठीक है. अच्छा, Zishan, if you were to add unit sales there, वो तो आपको बहुत ज्यादा रोज शो कर देगा. वो तो यूनिट सेल्स पे भी ग्रुप करेगा. वो आपको सारी इंडिविजुअल यूनिट सेल्स भी वहाँ पे ऐड कर रहा होगा. You should not be getting 6 rows अगर आप यूनिट सेल्स वहाँ पे ग्रुप बाय में ऐड करते हैं. Is that correct? Well, sir, I'm getting the same as yours, 6 rows. Okay, so let me try to run this. So I'm getting 376 rows here. अगर आप यहाँ पे यूनिट सेल्स ग्रुप बाय में ऐड करें. मेरा पहले वही था सेम आप वाला ही. अभी आपने यूनिट सेल्स मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं सिर्फ उसी का पाइप ऑपरेटर का कह रहा था कि वो डालना भूल गए थे हम पहले. Okay, all right. So अगर आप यूनिट सेल्स देखें ऊपर ऐड कर देंगे ना, देखें यहाँ पे उसने यूनिट सेल्स को भी एज अ ग्रुप ट्रीट किया है पहले. ठीक है, तो इट्स गोइंग टू ऐड दिस एज अ ग्रुप. तो वो सारी वैल्यूज को कंसीडर कर रहा होगा जो भी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है. ठीक है, सो दैट्स नॉट हेल्पफुल. आप इसलिए जब आप ग्रुप बाय करते हैं, यू ओनली लुक एट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स. ठीक है, you cannot group by continuous variables because that would not make any sense. Okay, so now this works. So if I run this again, I get the total unit sales for each of these categories. सर ठीक है, yes. सर आप कह रहे हैं कि ग्रुप बाय से कंटीन्यूअस वेरिएबल्स में नहीं हो सकते, तो सर रेंज बनाई जा सकती है? Yes. यहाँ से यहाँ तक Yes. So you can create a new variable. आप म्यूटेट यूज कर सकते हैं. म्यूटेट में आप उसको कंडीशंस लगा दें कि अच्छा अगर वो इस रेंज के दरमियान में है, इसको आप कह दें लो सेल्स है, इस रेंज के दरमियान में उसको मीडियम सेल्स कह दें, फिर आपके हाई सेल्स कह दें, एंड देन यू कैन ग्रुप बाय दैट कैटेगोरिकल वेरिएबल जो आपने खुद से क्रिएट किया होगा. सो दैट इज पॉसिबल. यस. ओके. तो सर ये जो यूएस आपने खुद वेरिएबल क्रिएट की है? नहीं, यूएस इज ऑलरेडी देयर इन द डेटा. अगर आप वो डेटा देखें, लास्ट कॉलम जो है दैट्स यस नो देयर. सर वो मेरा रन नहीं कर रहा यूएस. मैंने देखा है उसको, पता नहीं क्या आपने हो सकता है ऊपर सेलेक्ट में मिस कर दिया. आपने सेलेक्ट में डाला हुआ यूएस? नो सर, मैं देख तो आपको पहले वो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना. आप डेटा में से कुछ वेरिएबल्स पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू हैव यूएस देयर एंड सेलेक्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट इनसाइड. ठीक है, ओके. सर एक और क्वेश्चन है जरा. सर ये बताइए, मैंने वही फाइल खोली है जो मतलब जिस पे कल काम किया था, तो मुझे वो सारा फिर से करना पड़ा सेट एज वर्किंग डायरेक्टरी, वरना वो रीड नहीं कर रहा था. तो ये हर बार करना पड़ेगा? There is actually a way to specify a default directory. So I might have to look at it. So there is definitely a way. आप एक तो ये कर सकते हैं, जब आप सेव करें ना फाइल को, तो आप उसकी एनवायरनमेंट भी साथ सेव कर लें, तो जनरली दैट सेव्स
that working directory. लेकिन इसमें यहाँ पे एक तरीका भी होता है, you'll have to go to the settings and set a default working directory. So if anybody remembers कि वो कहाँ से होता है, they can respond अभी. Bakr, do you have an idea कि वो कहाँ से default हम सब change कर सकते हैं of सेशन working के मेन्यू directory? से शायद, सेशन के मेन्यू से शायद हो जाए। वो तो आप सेव वर्कस्पेस कर, यस, लेकिन यहाँ पे चूज डायरेक्टरी डिफॉल्ट तो आपको सेटिंग्स में जाके करना पड़ेगा, ये तो आपको सिर्फ इस सेशन के लिए करेगा। खैर, you can look for it in the settings, और ये कहीं पर जाके आप उसको डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं कि आपके डिफॉल्ट क्या हो, और then you'll have the same working directory every time. अगर आपने एक आपने सेव करना है, सर टूल्स में ग्लोबल ऑप्शंस हैं, उसके अंदर है टूल्स में ग्लोबल ऑप्शंस, ओके okay, yes, so you see this default working directory, yes, so this is default working directory. अब यहाँ पे इसको select कर सकते हैं default, ठीक है? Okay, so thank you Talha. Okay, sorry Talha, you want to say something? Okay, so similarly, you can do the same thing for the other aggregate functions as well. Maybe sum apply किया, you can do the mean, you can do the others as well. ठीक है, आप average कर सकते हैं, आप sum कर सकते हैं, you can do all of that stuff. All right, so अच्छा, अब इसमें देखें उसी तरह से when you are presenting data like this, you can also generally change the variable names here. For example, अगर मैं mean show करना चाहता हूँ, I can say summarize and I can add a variable name there. I can say use average sales as the name of this variable. So average sales are equal to mean of unit sales. Or I can say average unit sales. Now remember, you cannot have spaces between variable names. Spaces in a variable name. So अगर आपने average unit sales लिखना है, you can either type it like this कि आप first letters को capitalize कर दें, or you can have underscores between the words. Space नहीं हो सकता. So if I run this, as a variable अलग भी बना सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पहले करते थे, हम उसको greater than और वो साथ dash वाला साइन बना के हम एक अलग वेरिएबल बनाते थे ताकि वो हम स्टोर कर सकें एक जगह पे, अगर हमें बाद में उस पे वर्किंग भी करनी पड़ जाए. Okay, so तो आपने originally यहाँ से start कर रहे हैं. So all of this stuff that we've been doing, you can actually save all of this. So I can say this is basically unit. So okay, so average unit sales. अब इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं वेरिएबल नेम, थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्टिव कर रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि हमने यहाँ पे इसके अंदर क्या स्टोर किया हुआ है. So let's say I can say average unit would probably be understood. So average sales by let's say shelf and US. I can assign to this variable, right? अब इसको run करूँगा, it's going to save that thing inside this variable that I've created. अब इसको मैं आगे use कर सकता हूँ, ठीक है? So if I run this, I'm going to get the same result. यहाँ पे right side पे आप जाके देखेंगे, I have a new variable created here as well. The average sales and so on. It has 6 observations. तो यहाँ पे आपके पास show रही हैं, and it has 3 variables, right? However, when you save data like this, remember one thing: there is a standard thing you should always do. Otherwise, आप कुछ analysis जब आगे run कर रहे होंगे, you'll run into some problems. वो ये है कि ये जो data है, it's not like the previous data that we had, because यहाँ पे हमने group किया हुआ है. So अगर आप देखें इसको run करते हैं, you see at the top here, you have some groups assigned here. Groups में उसने यहाँ पे US based group किया हुआ है, ठीक है? So generally speaking, you do not want your data sets to be grouped like this, because उसके अंदर कुछ restrictions आ जाती हैं. आप US के ऊपर कोई आके नया function नहीं apply कर सकेंगे, because grouping variable के ऊपर grouping variable को आप ज़्यादा change नहीं कर सकते, ठीक है? तो whenever you have to save stuff like this,
you have another variable, another function called ungroup, and you should always use that if you want to save something. अब क्या करेंगे, ungroup function बस इसके आगे pipeline में add कर देंगे at the end, and if you run this again now and you see कि उस variable के अंदर क्या stored है, कि उसने grouping वहाँ पे remove कर दिया, ठीक है? So now it's like a simple table. अब इसके ऊपर आप आगे further पे analysis run कर सकते हैं, that would not be a problem. ठीक है? So always make sure कि जब आपने data को store करना है कहीं पर, you apply this ungroup function at the end. All right. Now, so this is what the summarize function can do. Similarly, you can add some further complications to it. So let's say I want to, for example, yes, so this is where we were. So ये हमने कर लिया. So we've covered the summarize function as well. Again, of course, we're going to have some exercise on this on data camp again. That are going to provide you more practice. अभी यहाँ पे mostly we'll be covering general concepts. इसके अंदर अब एक और चीज हम क्या कर सकते हैं? We have this function called a top n function. So let's say I use this same data set again. So I use it again here. And what I want to do is I want to summarize this data in a way कि हर category के अंदर, so let's say अगर मैं इस US को भी यहाँ से हटा दूँ, या सेल लोकेशन को हटा दें, या okay. So let's say मैं यहाँ तक कर लिया, group by कर लिया, summarize कर लिया. Yes, Aram, you want to say something? सर मैंने पूछना था, ये जितनी भी चीजें हम समराइज में यूज कर रहे हैं, ये हम म्यूटेट में भी कर सकते हैं? देखिए, दो डिफरेंट चीजें हैं. म्यूटेट के नॉट एग्रीगेट डेटा. म्यूटेट सिर्फ हर रो के ऊपर इंडिविजुअली फंक्शन अप्लाई करके एक और कॉलम क्रिएट कर देगा आपके ओरिजिनल डेटा के अंदर. ऐसे जो भी आपका लास्ट लेटेस्ट टेबल है उसके अंदर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा और उसकी उतनी ही रोज होंगी जितनी आपके पास पिछले टेबल के अंदर थी. जो समराइज फंक्शन है, इट्स जनरली गोइंग टू रिड्यूस योर नंबर ऑफ रोज. ठीक है, तो उसको डेटा को एग्रीगेट कर देता है. म्यूटेट फंक्शन इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन. वो आपके जो भी आपके टेबल है उसके साथ एक सिर्फ एक नया कॉलम एक ऐड कर देता है. ठीक है, रोज को काम नहीं करता. डज दैट मेक सेंस? यस सर. ओके. अच्छा, अब देखिए समराइज फंक्शन जब हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था, लेट मी ट्राई टू रन दिस एंड सी इसकी आउटपुट क्या आ रही थी. अच्छा, इसको देखिए मेरे पास ये तीन आउटपुट आ रही हैं. लेट्स से अब ये जनरली स्पीकिंग इट्स गोइंग टू बी मोर यूजफुल जब आपके पास हर कैटेगरी के अंदर कुछ ज्यादा नंबर्स हैं, एज इन हर कैटेगरी में कुछ ज्यादा वैल्यूज. फॉर एग्जांपल इन दिस केस मेरे पास सिर्फ बैड, गुड और मीडियम है. सो लेट्स से what I want to do is I want to look at only the top, let's say, 2 of these numbers. So let's say 2 of average unit sales. Try to run this and I get this is the output. So let me explain again. So okay, so this is what I had this is my output until this row. ठीक है, ये मेरे पास output थी until until before I ran this top n function. अब ये top n function क्या करता है? It's like the top 10 function you had in that pivot table. तो ये क्या करेगा? It will look at the values here, it will look at the categories there, और फिर देखेगा कि उन कैटेगरीज में से जो भी आपने ऊपर समराइज फंक्शन अप्लाई किया है उसमें से टॉप जितनी भी आप स्पेसिफाई करेंगे वैल्यूज, उतनी वैल्यूज उठा के आपको आउटपुट कर देगा. सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस आई एम गेटिंग माय हाईएस्ट सेल्स इन दीज 2 कैटेगरीज. तो ये मुझे क्या शो कर रहा है नीचे? गुड और मीडियम में गुड और मीडियम की सेल्स शो कर रहे हैं.
as my output. ठीक है? Now it might be more useful if I were to add. सर ये एक let's दफा say, फिर प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे टॉप एन वाला. Yes, so let me try to do it with a more useful example. अब इसमें आप ये करेंगे select के अंदर ना, let's add another variable and that is store ID. ठीक है, store ID अब वहाँ पे add कर लेते हैं एक और variable, उसको भी हम select करते हैं original data के अंदर से. I have this store ID added as well, and then let me remove this arrange function. We don't need this. Let's say मैंने उसको filter कर लिया फिर भी कि price greater than 100 हो. Group by कर लिया, group by shelf location. So let's say I don't group as well. I just group by store ID in this case, and I say show me the unit sales. देखिए इसमें भी the data is such that इसमें top n की इतनी ज़्यादा भी sense नहीं बन रही, but let's just discuss कि वो किस तरह से काम करेगा. So let's say मैंने group by कर लिया है store ID and I have the average unit sales for each store. Now of course we have one row for each store. The average sales जो हैं वो उतनी ही होंगी जितनी हर store की sales हैं. So in that sense it would not make a lot of sense. लेकिन जब हम इसको run करेंगे आगे, what we can say is we can say show us the top 10 stores with the highest average sales, right? So top 10 function क्या करेगा? जो भी आपके पास values आ रही हैं in your summarize function, what it's going to do is from that output आपको top 10 values वो दे देगा जिनकी highest जो है उसमें सबसे ऊपर आ रही है. So let's run this and it's going to give us, this is the output. इसमें मेरे पास top stores आ गए हैं जिनकी highest sales हैं. Because these are the 10 stores that are giving me highest sales in this case. Yes, Zishan. सर ये max का function हो गया फिर ये top वाला. No. This is not max function. Max function is just going to give you one single output. Max function आपको सिर्फ ये बताएगा कि एक single store, in fact वो store भी नहीं बताएगा, वो आपको सिर्फ वो value बताएगा. Okay, so let me try to run this. इसको मैं copy करता हूँ यहाँ पे. तो ये हमें बता रहा है कि हम by grouping by store ID हमारे जो top 10 stores होंगे. Yes. So grouping by store ID. Yes. तो group ID की बेस पे descending order पे करें तो उसकी जो head count से हम जो निकालेंगे वो भी यही होंगी values. Yes, exactly. Same होंगे बिल्कुल. So let's try to do that as well अगर आप वो करना चाहें. So let's say यहाँ पे मैं इसको arrange कर लेता हूँ. So देखिए मेरे पास जो पहले डेटा था ना उसको मैं arrange करता हूँ in descending order of average unit sales. And let's say I run this. तो मेरे पास देखें इसके जो top values आएंगे, अच्छा मैंने वो save किया उसको मैं remove कर दूँ. So top values आ रही हैं मेरे पास, वो वही हैं जो ऊपर मुझे यहाँ पे मिली हैं. Before doing that, top arrange there, or are they the same? So you try to run this again. तो फिर सर क्या फर्क होगा अगर हम arrange यूज करें या top n यूज करें? Range में तो आपको सिर्फ sort करके देगा ना. यहाँ पे आपको वो filter करके आप store कर सकते हैं उसको उसके अंदर. यहाँ पे तो देखिए आपके पास सिर्फ आउटपुट में शो हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले में आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्प्ले में आ रहा है. जो आप टॉप n के कमांड सेलेक्ट करेंगे वो एक तरह से फिल्टर अप्लाई कर देता है उसके ऊपर. वो सिर्फ टॉप 10 रोज को सेलेक्ट करता है, उसके अलावा बाकी सबको निकाल देता है वहां से. सर इसमें वो कंडीशन लगाई जा सकती है कि टॉप सेल्स हो फिर और या एंड साथ इसके टॉप सेल्स हो और या एंड टॉप एन में के मेरे टॉप 10 रोज देखनी है जिसमें हाईएस्ट ये सेल्स हो साथ साथ वो यूएस में हो, तो इस तरह की मल्टीपल कंडीशंस. वो आप नहीं टॉप एन के अंदर आप नहीं अप्लाई कर सकते. जो वो आप इससे ऊपर वाली रो में आप यहाँ पे देखें, आप पाइपलाइन में अगर स्टेज के ऊपर हैं फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एक और रो ऐड करके आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे स्टेज पे आप फिल्टर अप्लाई कर लें, फिर आप टॉप एन फंक्शन यूज कर लें. ठीक है, तो आप टॉप एन के अंदर डायरेक्टली फिल्टर की ऑप्शन नहीं होती है,
आपको फिल्टर का फंक्शन अलग से पाइपलाइन में ऐड करना पड़ेगा। Is that clear? यस सर, लेकिन इससे तो सिर्फ एक वेरिएबल पे आप कर सकते हैं ना। जाहिर है, अब ऑफ कोर्स अगर आपने टॉप वैल्यूज देखनी है कहीं से तो आप ऑफ कोर्स आपको एक सिंगल वेरिएबल आप बता सकते हैं ना इसकी टॉप वैल्यूज देखें। टॉप वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल वेरिएबल्स डज नॉट मेक सेंस। नहीं, टॉप वैल्यूज इन अ स्पेसिफिक कंडीशन, तो वो उसके लिए फिल्टर पहले लिखना पड़ेगा। यस, टॉप पहले कंडीशन लगा देना, उससे पहले आप टॉप एंड से ऊपर एक कंडीशन लगा दें तो आपको फिल्टर ऑलरेडी आपने कर लिया और उसके बाद फिर आप टॉप एंड फंक्शन यूज कर लेंगे। ओके, राइट, ओके। अच्छा, now that's pretty much what I wanted to cover. There are a few things in the dplyr library जो और भी important हैं, but since we do not have a lot of time, yeah, in fact we have some time today, तो हम ये कर सकते हैं, yeah, so let me give you an introduction to that as well, and then I would encourage you कि आप जो है वो data camp वाला chapter में वो भी आपको assign करूँगा, you try to look through the videos and you try to work on that as well, and that is basically how we can join different tables. For example, a lot of times what happens is जब आपके पास कोई भी real world data होता है, what you have is आपके पास वो data multiple tables में stored होता है. I think a lot of you are studying MIS right now as well, तो आपने देखा होगा कि data को जो है वो normalize करना होता है आपने, एक ही single table के अंदर you have only information about some specific objects, और अगर आपके पास different kinds of information है तो आप उनको different tables में store करते हैं for greater efficiency with regards to data storage and with regard to the speed of querying as well. तो उस केस के अंदर before you can run any sort of analysis, तो आपको जहां से जो variables required होते हैं, you first have to join those tables together, and then you can run queries like this and run some analysis like this. Okay, so joining different tables is also a very important thing that you should know about when you are working with data analytics. So let's get a quick introduction about some of those here. I don't have a data set like that available right now because I was not planning to cover that today, but what I'll do is I will go quickly to data camp, since we decided we can spend until 1:15 in this class. So let me give you a quick introduction about that. सर आप हमें एक लिस्ट भेज सकते हैं फंक्शंस की जो जिनसे मुख्तलिफ ऑपरेशन जो काम हो, जैसे फिल्टर, ग्रुप बाय, इस तरह के। Okay, yeah, sure. So if you look at if you've done the assignment as well, उसमें वो सारे functions भी cover हो रहे हैं, but I can of course share the list as well. Okay. और सर ये आपने 115 डिसाइड किया सर, कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं था इसके ऊपर? नहीं, मैं तो 130 डिसाइड करा था, तो फिर आप लोगों की कोई जोर फरमाइश। वो तो सर वो टीएस भी है ना यहाँ पे, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन 115 भी बहुत। नहीं, आप लोगों ने खुद जो है कहा था, मैंने तो 115 के बोला भी नहीं, आप लोगों ने खुद कहा था कि 115 कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कहें। नहीं सर, हमने 1 कहा था। चलिए, अभी एक दफा डिसाइड हो गया, बार चेंजेस करना ना उतना ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से इतना अच्छा नहीं समझ आता, तो हम अभी इसी पे चलते हैं जो हमने कर लिया हुआ। So we have a few minutes, so अभी अजान हो रही है, so I'll just stop for a minute and while I set this up यहाँ पे I'm quickly थोड़ा सा देखेंगे introduction of how we can join different data sets. ठीक है?
Tala, you want to ask something? यस सर, मुझे वो समराइज वाले के बारे में पूछना था कि ये मिन मैक्स वगैरह पहले समराइज के बगैर खुद नहीं Sorry, काम I कर can't hear सकते? you. Could you say that again? हेलो Yes, Tala. Yes. सर, मैंने पूछना था ये समराइज के बगैर काम नहीं कर सकते हैं, मिन मैक्स मीन वगैरह? नहीं नहीं, वैसे अगर आप करेंगे तो वो आपको जो है वो सिर्फ वो देगा, रो वाइज दे देगा कि आपकी कौन सी रो में मिनिमम वैल्यू। वो तो dplyr का फंक्शन नहीं होगा, वो R का बेस फंक्शन होगा। सो अगर आप यहाँ पे देखें ना, कोई भी आप फंक्शन अप्लाई करते हैं ना, देखें यहाँ पे बेस R में भी ये मेन फंक्शन है, एंड दैट्स जस्ट गोइंग टू रिटर्न टू यू कि जो भी आप इसमें वेक्टर इनपुट करेंगे उसमें से आपको मिनिमम वैल्यू बता देगा। लेकिन ये dplyr की जो पाइपलाइन के अंदर है, इट विल नॉट वर्क दैट। राइट, ओके। यस सर। हाँ नहीं सर, मैं ओके कह रहा हूँ। अरहम सर वो गलती से हो गया। ओके। All right, so let's look at this. So I don't know how to find information about the data here. Acha, this is actually a data about Legos. Legos ki, I think it's their sale, their company data, and they have different tables here. So let's have a look at these two tables first. एक आपके पास ये parts का table है. Let's look at what information we have here. अच्छा, आप लोग मेरे ख्याल स्क्रीन नहीं देख सकते यहाँ पे. So सर आप कौन सी स्क्रीन पे कर रहे हैं? Yes, so I'm just sharing that again. Share. Okay, can you see my screen now? Yes sir. Okay. Yes. Okay, great. So अब यहाँ पे मेरे पास कुछ variables हैं इस एक, अच्छा, so this is a data set by Legos. अब उनके पास कुछ information पड़ी हुई है एक table के अंदर, उस table का नाम है parts, ठीक है? This is the table that's known as parts. अब इसके अंदर देखें नीचे at the bottom right here, we see it has 3 columns and it has 17,500 rows here. ठीक है, so the first column is part number. So ये हर part को उन्होंने कोई number assign किया होगा, कोई ID होगा उसका, ठीक है? Then we have its name, which is the name of the description of the name, its description of that part, and then we have a part category ID. So each part is probably assigned to some category. उन्होंने कोई categorize किया होगा different parts को. For example, अगर आपने Legos देखी हो तो उसमें different shapes होती हैं, हो सकता है उन्होंने different shapes के लिए different categories assign की हो. Maybe they vary by size as well. There could be a lot of things like that. तो हर part को एक category assign है यहाँ. So 1, 1, 7, 58, 44 category number एक, right? Category का ID. So these are the 3 variables that we have in this data. Now, as you can see, if we were to work on this single data, there's not a lot of information that we can get out of it. ठीक है, क्या इसमें क्या सिर्फ parts की description पड़ी है, categories पड़ी हैं, so सिर्फ ये information. However, आपको इनके पास जो बाकी tables होंगे where they are storing their data, they might not have all of this information available in each of those tables. So, for example, in this particular table, अगर आप ये first column देखें, ये 0901, this is a number, a unique number that is assigned to this part. जो यहाँ पे ये इस नाम का जो part है उसको एक unique ID assign हुआ, ठीक है? तो ये जो इसमें description है इस part की, that is only going to be stored in this particular table, और ये information बाकी tables में कहीं पे repeat नहीं होगी to save storage basically,
ठीक है, अब यही चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे हर जगह पे। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई और टेबल है जहां पे उन्होंने एक कॉलम में ये इंफॉर्मेशन उनको ऐड करनी है कि ये कौन सा पार्ट इसमें यूज हुआ है, तो all they have to do is they will just use this part number as a column there, और फिर अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी अच्छा ये पार्ट नंबर एक्चुअली में है क्या, what is this describing, तो आपको इस टेबल को एक्सेस करना होगा to get that information. And is that making sense? Any questions on this, or do you need more clarity? दोबारा एक दफा समझा सकते हैं? Okay, so basically the purpose, one of the primary reasons why we have data stored in multiple tables generally is that you want to store, that you want to save your data storage. ठीक है, उसका ये होता है कि आप basically, for example, आपके पास अगर let's say 17,000 different parts हैं, 17,500 different parts हैं यहाँ, ठीक है. Let's look at another table that might make it a bit easier for you to understand. एक और टेबल है इनके पास पार्ट कैटेगरीज के नाम से, इसके अंदर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है. It only has 2 columns. ये आपके पास फर्स्ट कैटेगरी है, ये आपके पास कैटेगरी का नंबर है, ये आपके पास उस कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन है. तो in total they have 64 categories in their data set. ठीक है, so ये इस टेबल के अंदर क्या है, 64 रोज है, 2 कॉलम्स है, और ये डेटा किसका है, पार्ट कैटेगरीज का. अब देखें अगर ये पार्ट कैटेगरीज और वो पार्ट्स सिंगल फाइल के अंदर स्टोर्ड होते, सिंगल टेबल के अंदर स्टोर्ड होते, तो उसका मसला क्या होना था. So this is just a very simplified example in a sense, but it's going to give you an idea of why it's so useful. ऊपर देखें यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स हैं टोटल. We have 3 columns and 17,500 rows. And we have here information in a column that is 1, 1, 1, 7, and so on. That is telling us which part category does each of these part belong to. ठीक है, हमने सिर्फ एक नंबर से उसको असाइन कर दिया. अगर आप नीचे आए यहाँ पे दूसरे टेबल में, तो यहाँ पे देखें पार्ट कैटेगरीज के नंबर्स हैं, उनकी आईडीज हैं, और हर आईडी के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ, राइट. नाउ लेट्स सपोज आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पार्ट कैटेगरी आईडी, या इनफैक्ट अगर आप वो यूज करते भी और इसके साथ एक और कॉलम ऐड करते पार्ट कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन का, कितनी टोटल कैटेगरीज पॉसिबल है हमारे पास, ओनली 64. How many rows do we have in this data? Originally जो parts वाला data है उसके अंदर we have 17,500 rows. तो वो 64 values जो हैं यहाँ पे 17,500 times repeat होनी थी, and that would have required a lot of space, and that would have been wastage of space, क्योंकि आपकी वही values repeat हो रही हैं. आप उनको separate tables में आपने store कर लिए. अगर आपको कोई analysis run करना है, you can always combine those tables only for that analysis, do that analysis, and you're done with it. आपको वो कहीं पे store नहीं करना पड़ता वो सब कुछ. So this is the basic idea कि आप data को different tables में store करते हैं to save the storage space. Azhar, does that make sense now? Yes, sir. You should cover this at some point in your MIS course as well. कि आप किस तरह से data को manage करते हैं. But if you have not covered it now, I hope this serves our purpose for now at least. ठीक है? Excuse me. Yes. Sir, but ये बार-बार joins करना speed के लिए बुरा नहीं है? Yes, लेकिन आप देखें कि आपकी speed के लिए बुरा है. Yes, that's true. अगर आपके पास ये सब information एक single table के अंदर available होती, तो your speed of that analysis would have been much better. जब आपको join करना पड़ेगा multiple tables से, the speed is going to be slower. But then again, you always have this trade-off. You have the trade-off between speed and storage. तो फिर आपको हर company को अपने उसके हिसाब से देखना होता है how much speed matters to them and how much storage matters to them, because both of them are
sort of important, स्टोरेज जो है वो एक्सपेंसिव भी होगी। अगर आपको कुछ ऐसे आपको रियल टाइम कुछ एनालिसिस रन करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई ब्राउजर के अंदर आपको रियल टाइम एनालिसिस रन करके कोई यूजर जो भी काम कर रहा है उसको अपने साथ साथ जो है उसकी बेसिस पर मॉडल रन करके अपने आउटपुट साथ साथ शो करनी है, in that case your speed might matter more. तो it's generally a trade off. तो आप स्टोरेज अगर आपको स्पेस करनी है, आपको सेव करनी है थोड़ी सी, तो यू जनरली सेव द डेटा इन मल्टीपल टेबल्स। अब फिर उसमें वो होगा कि अच्छा व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ टेबल्स। अगर आप लेट्स से कोई इंफॉर्मेशन आप 30 टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं एफिशिएंटली instead of let's say having to use 150 tables, तो आप कोशिश करेंगे जितने मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट टेबल्स आप यूज करें with saving as much storage as possible, तो आप उसको प्रेफर करेंगे, बिकॉज जितने आपके टेबल्स इंक्रीज होंगे उतनी आपकी स्पीड एफिशिएंसी जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो इट्स ट्रेड ऑफ। यस सर, ये कैटेगरी डिस्क्रिप्शन का कोई और टेबल है? Yes, so we have two different tables. We have a parts table that has 3 columns. ये आपके पास शो हो रहे हैं. We have another table by part categories which has these 2 columns here. ठीक है? सर, ये लिंकिंग में ही बहुत टाइम लग जाएगा अगर ऐसे मल्टीपल टेबल्स हमारे पास हों। अगर फॉर एग्जांपल अब जो कैटेगरी का जो टेबल है उसमें Yes. भी डिस्क्रिप्शन है वो एक ही रो में होगी ना? Yes. हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल हमें ये हाँ जी, जो फर्स्ट हमारे पास जो टेबल है पार्ट्स का, अगर हमें वहाँ कोई एक्सेस करना हो तो 2 बार लिंक लगेंगे हमारे, एक लगेगा पार्ट कैटेगरीज में और एक कैटेगरी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर हम इन 2 टेबल्स के बजाय वो जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर ही ये जो कैटेगरीज लिखी हुई हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इनपुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारा टाइम बहुत बचेगा। Yes, that's very true. अब देखें, मैं आपको ये बताया था कि it's a very simplified example. So generally आपके पास इन tables के अंदर rather than having only 3 columns and 2 tables, you to have let's say tens of columns or hundreds of columns in each of these tables. ठीक है, तो अब उसको जब मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, your storage issue is basically tends to get to a number that is not feasible. आपको इतना ज्यादा वो बड़ा इश्यू हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। आप सब चीजें एक सिंगल टेबल के अंदर कर नहीं सकते। Yes, it's going to give you speed issues, but again, it's a trade-off between the storage and speed. अगर आपको एक ऐसा एनालिसिस जो आपको 2 टेबल्स को ज्वाइन करके कोई ऐसा एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा दफा रन करना पड़ता है, आप उसको एज a view basically आप सेव कर सकते हैं for repeated analysis। तो आप उसको एक दफा सेव करके सिर्फ उस चीज को रख लेते हैं separately for running that kind of analysis। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको दूसरे टेबल से डिस्क्रिप्शन उठानी होती, अगर इसके अंदर लेट्स से मेरे पास 50 और वेरिएबल्स होते और मुझे सिर्फ मैं इसमें इंटरेस्टेड था कि मुझे ये डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे मुझे इस टेबल में चाहिए, तो what I would have done is I would have added I would have joined those 2 tables एक दफा सिर्फ, and then I can use that single table जो मैंने कहीं पे सेव किया होगा to apply this analysis every time that I want to run that। ठीक है, तो that's how you basically deal with it। Yes. Okay, so let's try to do this quickly because we are running out of time. So ये एक parts category है, ये एक parts का टेबल है, एक part categories का टेबल है। What we want to do is we want to join the 2 tables in a way कि मुझे इसी टेबल के अंदर इसकी part category की description भी साथ मिल जाए। ठीक है, that's what I want to do here. So what I need to do is I need to use this function that is called an inner join function. So ये होता है inner join। इसके different arguments हैं इसके अंदर। The first argument is, अब देखिए pipeline चल रही है उसी तरह से, there's this parts table सबसे ऊपर, I have this pipe operator। What I'm doing is I'm joining that with another table। So मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे इसको join कर दो with this part categories table, right? Then I have to tell कि मुझे ये join कैसे करना है, because R does not know कि आप description जो है वो 64 values है सिर्फ यहाँ पे 17,500 rows हैं, तो वो किस तरह से आप join कर सकते हैं दोनों को। So you need to tell R कि आपने करना ये है कि जो part category ID इस first table के अंदर है
और जो आईडी कॉलम सेकंड टेबल के अंदर है, आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना। इन दोनों को बेसिकली जब ये इक्वल होंगे तब आपने उस बेसिस पर इन टेबल्स को ज्वाइन करना। ठीक है, सो यू हैव टू टेल आर कि कौन से कॉलम्स दोनों के अंदर कॉमन है, ताकि इट नोस कि जब ये दोनों इक्वल होंगे तब आपने उसकी बेसिस पर उन टेबल्स को ज्वाइन करना। ठीक है, so in this case what I can do is I can add that condition here, but before I add, Aisha, you have a question? सर इसमें पार्ट कैटेगरी आईडी के अगेंस्ट हम इसको ज्वाइन करेंगे? Yes, so दोनों के अंदर देखना कॉमन वेरिएबल कौन सा है। पार्ट कैटेगरी आईडी यहाँ पे जो है that is the same as this ID in the second variable, in the second table. इसका जो ID है that's equal to this part category ID in the first table. तो इन दोनों को इसकी बेसिस पे आपने ज्वाइन करना है। Yes, Aisha. Aisha, we can't hear you. कर ले समझाने की, it's getting really complicated अब। Sorry, could you repeat that? Okay. Aisha, sorry, we can't hear you. Sir, I was saying कि थोड़ी सी आप स्पीड ऐसा कर लें क्योंकि ये बहुत complicated हो रहा है। Okay, all right. So this is the last thing we're going to do. मैं सिर्फ यहाँ पे एक command यहाँ पे add कर रहा हूँ. So all we need to do is हमने इन दो है join करने के लिए we need to tell R कि आपने किन variables की basis पर, किन columns की basis पर दोनों को join करना है, ठीक है? So that basically means कि यहाँ पे जो first table के अंदर जो part category ID वाला column है, ये join function क्या करेगा? It will look at, for example, this one here and this. ये दूसरे टेबल में जाएगा, वहां पे इस one को देखेगा कहां पर है और उस one के अगेंस्ट जो डिस्क्रिप्शन पड़ी होगी उसको वहां पे जाके ऐड कर देगा। You can think of it like कि यहाँ पे इसको वो सर्च करेगा, इस वैल्यू को जाके उस दूसरे टेबल में सर्च करेगा और उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू उठा के उस टेबल में साथ ऐड कर देगा। ठीक है, so it's very similar to that VLOOKUP function in a way. It's not exactly that, but it's very similar to that. ठीक है, तो आप ये use कर सकते हैं यहाँ पे। So how are we going to add? How are we going to put them equal to each other? We have part equal to part category ID. Let me have a look at the tables again. Part category ID in the first table. And we have ID in the second table. And it still has indentation. So this works. Big bracket must कर दिया था. So this is what happens when you do not review it. Okay, so yes. So now what you've done is we have this part number in the first column, we have the name, we have the part category ID, and you have this category name added at the end as well. ठीक है? So आप उसने क्या किया, एक single table में वो दोनों चीजों को add कर दिया, दोनों variables को add कर दिया. So now you can save this in a table as well. You can say this is part categories names, and you can save it in this table. उसको आपने इसके ऊपर कोई analysis करना हो, you can use this table again, use from this variable. Okay. Any questions on this? What I'll do is I'll try to record a short video in this, and this I'll definitely try because हमारे पास class में इसको cover करने का time नहीं है. What we'll do is I'll record a video on this, explaining what inner join is, what left join is. अब आपको से कुछ और joins की categories भी आएंगी आगे. There's a left join, there's a full join. So I'll give you an introduction to that there. It's going to be part of your assignment in a sense, जो आपकी data camp assignment, but it's not going to be tested in the exam because हम इसको detail में class में cover नहीं करे. So it's not going to be part of your exam.
However, you will still have to do the data cam assignment on it. It's going to be it's not going to be very difficult. आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो वो हो जाएगा. I'll also be available to answer any questions that you have. Okay, I'll stop here and we'll continue on this. We'll not continue on this. We'll continue with another thing in our next time. So we stop here. Those of you who want to leave, they can do so. And if you have any questions on this or on the assignment, I'm here for a few minutes, so we can discuss that right now.